hope you are all well. So welcome back again to my mathematics class 1. So students, in my previous video यानी last video में आपने देखा था कि मैंने chapter number 2 numbers from 1 to 9 complete कर लिया था in your textbook. See the book exercise also I explain how you have to write down it and how you have to solve it, right? So also I said that I will start in my next video new lesson. So your new lesson is, if I'm not telling you directly lesson that this lesson is. For example, we said को पता चलेगा that which lesson this is. If I'm having, see, I'm having one chalks. Can you see how many chalks? One and two chalks. Two chalks were there, and then on my left hand, on my right hand, I'm having two chalks. Can you count? One and two. And in my left hand, I'm having one chalk. Now I want to find out total how many chalks in my both hand. यानी दोनों हाथ में मेरे पास टोटल कितने चॉक्स है. सो पहले मैंने टू हैंड्स यहाँ पे रखा, टू हैंड जो मेरे राइट हैंड में टू चॉक्स है, एंड उसी के साथ ये मैंने रख दिया. I'll put together, put all together, right? So now I will count to find out how many total chalks in my hand. So let's count. 1, 2, 3. How many students? 3. So here first I am having one chalk, sorry, two chalks in my right hand, right? Then I am having one chalk in my left hand. Now I want to find out the total chalks in both hands. Right? So in my right hand I am having two chalks, and in my left hand I am having one chalk. So I want to find out total chalks in my both hands. Right? So how many we count? We count 3 chalks, right? हमने count किया 3 chalks. Understood students? Now students, so what you did? 2 chalks और 1 chalks का आपने क्या किया? Counting किया. You are putting all together, and in next language, in 2 chalks you are adding 1 chalk. आप क्या कर रहे हो? 2 chalk के अंदर 1 chalk आपने add किया. They together total number of chalks. Right students? आपने क्या किया? 2 chalks plus 1 chalks. You add both the number of chalks, and you get the total chalks. Right? So this is what students. This is the symbol of addition. किसका symbol है? sign है addition. We are doing addition. Right? So for addition students, we are having so many keywords. Like that kind of words if you are found, you have to do the addition. If you are solving number story, if you are facing any problem like the addition in your real life. For example, you are going in a shopkeeper, या फिर आप शॉप पे जाते हो and you are buying 2 chocolates. You are buying 2 chocolates. आपने क्या किया students? 2 chocolates buy की. और 1 chocolate की प्राइस 2 रुपीस है. राइट? कितनी है students? 2 रुपीस. So 2 chocolates की कितनी होगी? So here you buy how many chocolates students? 2 chocolates. Like this. So 1 chocolate price is, यानी एक चॉकलेट कितने रुपीस का है? 2 रुपीस. तो इससे 2 चॉकलेट्स के कितने होंगे? यानी दूसरे चॉकलेट की भी प्राइस कितनी है? 2 रुपीस. So 2 रुपीस 2 रुपीस. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2, यानी 1 2 रुपीस, 1 2 रुपीस. So total how many students? Let's count. 1 2 3 4. So total कितने हुए students? 4. That means 2 plus 2 is equals to 4. तो आपको ये पता चल गया एडिशन आपको कहाँ पे यूज हो सकता है स्टूडेंट्स. आप अगर कहीं पे कुछ चीज बाय करने जाते हो, राइट,
कहाँ पे गए स्टूडेंट्स? स्टेशनरी पे। फर्स्ट यू बाय वन पेंसिल। आपने क्या बाय किया स्टूडेंट्स? पेंसिल which is cost rupees 3. पेंसिल की प्राइस कितनी है? 3 rupees. And then you buy one big eraser. आपने क्या बाय किया स्टूडेंट्स? इरेजर जिसकी प्राइस है ₹5. Now you have to find out the total how much money you have to pay to the shopkeeper. यानी जो स्टेशनरी वाला पर्सन है उसको आपको कितने पैसे देने हैं? तो आपने एक पेंसिल बाय की जो 3 रुपीस की है, इरेजर बाय किया जो 5 रुपीस का है। Now टोटल मनी फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे आप स्टूडेंट्स? पहले 3 रुपीस के लिए ऐसे 3 कर देना है सर्कल and then 5 rupees के लिए 1 2 3 4 5 राइट। पेंसिल की प्राइस यहाँ पे लिख दी और इरेजर की 5 हमने सर्कल्स ड्रॉ करके लिखा। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट टोटल अमाउंट राइट। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? टोटल 8। सो आपको कितने पैसे पे करने हैं? 8 रुपीस। मीन्स 3 plus 5 is equals to 8. So we have to do the addition. So students, your new lesson, which is your lesson number 3, chapter 3, addition. आपकी टेक्स्ट बुक है उसका थर्ड लेसन है एडिशन, वो मैं अब स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बता दिया कि हमें एडिशन करना है। आई शो यू फर्स्ट विच लेसन इज दिस, यानी आपको लेसन में क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन का सिंबल दिखाया, हाउ यू हैव टू डू द एडिशन। देन एडिशन आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? आपको डेली लाइफ में, आपकी रूटीन लाइफ में एडिशन कहाँ पे यूजफुल होता है? इसके मैंने 2 एग्जांपल दिखाया कि आप शॉप पे जा रहे हो, चॉकलेट्स बाय कर रहे हो, स्टेशनरी पे जाके ये चीजें बाय कर रहे हो, तो आप टोटल अमाउंट मंथली पे करने को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया? नाउ स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग यू सो मेनी एग्जांपल्स, तो क्लियरली आपको एडिशंस का रियल में एडिशंस क्या है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो दैट आई एम शोइंग यू, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, सो now addition के related अगर हमने example लिए, here first example A, आप देख सकते हो here pink color 1 2 3 chocolate are having, then I'm having 2 chocolate of green color। आप लोग identify कर सकते हो दोनों का different color है। now I want to find out that total how many chocolates I have, right? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, मेरे पास कौन सा है? पहले पिंक कलर, सो पहले मैं पिंक कलर का ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, सो हियर आई एम ड्राइंग हाउ मेनी 3 chocolates of pink color। So 3 chocolates I will draw, then I am having 2 chocolates green color। Then students, I am having 2 chocolates of green color, so that I am drawing 1 and 2. Right? Now we will count and find out the total chocolates. So first 3 pink color chocolates, right? Then 2 green color, and we will see here the total. We will see the total chocolates. So let's count students together. 1 2 3 4 5. How many chocolates students? 5 chocolates. Understood students? So that means students, in 3 chocolates we are adding this 2 chocolates, हमने 3 पिंक कलर की चॉकलेट्स के अंदर 2 ग्रीन कलर चॉकलेट्स
right? Then 1, 2, 3, 4. How many ice cream students? 4 ice cream. Right? Now I want to find out the total number of ice creams. So let us drawing students all together. Let's do pehले 2 ice cream having a pink color. So 1, 2, which is having a pink color like this. Can you see students? So that I am putting here. Then I am having 4 ice cream purples. So 2, 3, 4. So like this. Can you see students? Now we have to find out the total how many ice cream we have now. Right? So let's count all together. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many ice cream students? 6 ice cream. So total we get 6 ice creams. Right? So that means students 2 plus 4 ice creams is equals to 6 ice cream. Understood students? आपको समझ में आ गया? Now one more example I am explaining you. एक और दो एग्जांपल है जिसमें जीरो जैसे हमने नंबर्स वाले में जीरो का कॉन्सेप्ट देखा था तो उसी के रिगार्डिंग एक और एग्जांपल है that I am showing you. Okay students, next is see I am having 1, 2, 3, 4, 5. एक और है एक चीज कैसे stars. So I'm having 5 stars. Then plus here you can see you can count anything. आपको कोई stars है कोई भी अलग different shape or anything you can count. No, that means also this. That means we can have nothing if we are count anything blank or empty. Then what we have to consider? If you have found empty, so that we consider 0 stars, right? 0 stars. Empty, now आप देख सकते हो, you can't count a single star over here. Can you count? Can you see? No, that means 0 stars. So total how many stars? So that I am drawing 5 stars first. 2, 3, 4 and 5. The 5 star I have drawn, right? And 0 star means 8 star. I don't have to draw it. So मुझे draw नहीं करना है. Now I have to find out total how many stars. अब मुझे find out करना है students कि कितने stars हैं. So let's count 1, 2, 3, 4, 5. How many stars students? 5. So we get 5 stars. So that means students 5 plus 0 is equals to 5. यानी आपका 0 का भी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि अगर इफ यू आर एडिंग 0 इन एनी नंबर आप कोई भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो जो नंबर है हमें वही एज अ आंसर मिलेगा. इन 0 का मतलब क्या होता है? नथिंग. सो कुछ भी नहीं है ऐड करेंगे तो सेम जो चीज है हमें एज इट इज आंसर मिलेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 0 का कॉन्सेप्ट था. देन next is here you can see I'm having a marbles of orange color and a pink color. Can you see? Right? ये orange color के marbles है and a pink color. So let's count first orange color marble. So 1, 2, 3. How many marbles students? 3 marbles. 3 orange color marbles. Right? And 1. How many marbles?
2, 3. Then this one pink color marble I'm drawing over here, right? So that I can get the total how many marbles I have. Okay, so let's count students. 1, 2, 3, 4. How many marbles students? 4 marbles. Understood? That means 3 plus 1 is equals to 4. और ये मैंने वन वाला कॉन्सेप्ट क्यों एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स कि आप जब भी कोई नंबर के अंदर एनी नंबर इफ यू आर एडिंग वन नंबर यू विल गेट द आफ्टर नंबर ऑफ दैट नंबर। यानी हमें पता है ना अगर हमें कोई आफ्टर नंबर पता नहीं चले दैट ईच नंबर केम आफ्टर दिस विच नंबर केम आफ्टर 2 सो क्या करना है 2 के अंदर हमें 1 ऐड करना है सो वी विल गेट द आफ्टर नंबर राइट। सो दिस आर द डिफरेंट एडिशन के लिए था प्रॉपर्टीज जैसा ठीक है तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट्स नाउ एडिशन के रिगार्डिंग हियर आई एम शोइंग यू सम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी अगर आप नंबर स्टोरी स्टार्ट करोगे यानी एडिशन करना है कैसे पता चलेगी राइट। सो फर्स्ट थिंग व्हिच वन इज योर add all together then more in all right and altogether more in all so these are the keywords which you use for doing addition when maximum addition करना है तो generally addition के लिए ये words use होते हैं। yes or no students are you getting my point कौन कौन से है add altogether more in all यानी for example add I'm having 3 add 2 more 2 what we get so we use add so we have to do the addition all together जैसे अभी हमने देखा था कि हमारे पास 3 marbles थे 3 orange color and 1 pink color marbles how many marbles all together यानी एक साथ अगर हम एक साथ सबको रखेंगे तो क्या मिलेगा so all together is a one kind of keyword for addition yeah more that means for in my जैसे मैंने chalks वाला explain किया था that I am having 2 chalks in my right hand and one more chalk I am having in my left hand right 2 chalks in my right hand and one more I use word more so this is also keyword for addition and in all तो वो chalks में मैंने बोल दिया अगर that how many in all chalks I have so these are also keyword for the addition okay understood students so addition के regarding टेक्स्ट बुक में मैंने स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग को बहुत सी चीजें एक्सप्लेन की कि डायरेक्टली मैंने टेक्स्ट बुक नहीं दिया that addition एक्चुअल में क्या है basic introduction दिया then I am going to so many example how you have to do the addition how addition actually works and also I'll explain you that where you can use addition right आपको addition real life में कहाँ यूज करना आप कहीं बाई करने जाते हो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चॉकलेट्स का स्टेशनरी का राइट ओके स्टूडेंट्स सो let's see now we will move towards your textbook work okay so let's see Okay students, so this one is your chapter number 3 textbook page number 51 कौन सा पेज नंबर students 51 addition right addition का spelling ADDITION addition right so here you can see one more so here you can see in the first picture first having 1 and 2 parrots then 2 parrots sleeping and one more parrot came so total how many students so 1 2 3 parrots then 3 parrots one more added so what total how many students 1 2 3 4 parrots right then here you can see 4 parrots and one more parrot join them so total how many so 1 2 3 4 and 5 parrots so that means one more added so we have to count the total parrots
ओके स्टूडेंट्स, सो 51 पे सिंपली आपको काउंटिंग सिखाया है एडिशन में. वन मोर, अगर इफ वी आर एडिंग वन वन, सो व्हाट वी गेट, राइट. नाउ वी हैव टू टर्न द पेज, विच इज़ योर पेज नंबर 52. कौन सा पेज नंबर है स्टूडेंट्स? 52. कैन यू सी 52 पेज नंबर? ओके, इन इट व्हाट इट इज गिवन, क्या दिया है स्टूडेंट्स? हियर, how many, ALTOGATHER, how many altogether, जैसे मैंने बोला था altogether means we have to find out the total. So here you can see in the first picture, one, two cows. How many cows students? Two cows. And in the second picture you can see how many cow? Only one cow. So here mention one cow. So two cows and one cow is equals to one, two and three cows. Understood students? Now here let's see one more example. Here I am having in the picture one, two, three children and one, two children is equals to one, two, three, four and five children. Understood students? Okay, then next is the flowers. Now here you can see blank. Now we have to count and write down the answer. So let's see in the first picture how many flowers students. So here 1, 2, 3, 4 and 5. How many flowers students? 5 flowers. And in hand how many flowers? So 1, 2. How many? So here you have to write down number 2. So 5 flowers and 2 flowers. Now if we are putting together means here 2 flowers, also we have to keep in this vase. So total how many flowers? So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. How many flowers students? Total 7 flowers. Are you getting students? समझ में आ रहा है ना? Okay. Then now birds. So let's count in the first picture how many birds? Here 1, 2, 3, 4. How many birds students? 4. So here you have to write down 4. Number 4. Now in the second picture, how many birds? So 1, 2. How many students? 2. So here you have to write down number 2. So 4 birds and 2 birds. So total how many birds? So let's count in the third picture. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many birds students? Total 6 birds. Understood students? समझ में आया? Now next page which is your page number 53. 53 पे दिया है again how many altogether. Again we have to find out the total, right? So you can see in the first picture 1, 2, 3, 4, 5, 6 shirts. In second picture 1, 2. So 6 and 2. Now total how many? So if we are putting 6 and 2 all together, so total how many shirts we found? So let's count students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So how many shirts students total? 8. Now here let's count this one. How many tomatoes? 1, 2, 3, 4, 5 tomatoes. So here you have to write down number 5. And here students in this picture, can you found any tomatoes? आपको कोई tomatoes यहाँ पे दिख रहा है?
You can see it's empty box. ये blank है, empty है, कुछ भी नहीं है. That means if we found empty or blank, what we have to consider? We have to consider it as a 0. So 5 and 0. So total how many? 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 and 0 we get 5. मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाया था ना स्टार्स वाला, राइट? Now let's count this one. 1, 2, 3, 4 ants. How many students? 4 ants. And in the second picture, 1, 2. How many ants? 2 ants. So 4 and 2. Now this 4 and 2 we are putting together all together. So total how many ants, students? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many students? Total 6 ants. Understood? Okay. Now last one. Here, how many books? 1, 2. How many students? 2 books. And here. Now students, can you see any books in this picture? No, we find empty. So if we found empty or blank, what we have to consider, students? We have to consider it 0. So 2 and 0. So how many we get altogether? So 1, 2. So how many books? 2. अंडरस्टूड दिस इज़ योर ज़ीरो कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्स वाला लेके कि कोई भी नंबर के अंदर अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो जो भी हमें नंबर है एज इट इज़ आंसर में मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल एक्सप्लेन यू पेज नंबर 51 आपका स्टार्टिंग का पेज 52 and 53. In this video till here I will explain you. Inshallah in my next video I will explain you further pages. Okay students, till then stay home, stay safe, take care of yourself and Allah Hafiz students.